बीजेपीमा प्रवेश गरेपछि तपस रोयलले तृणमूललाई निशाना बनाउँदै भने कि टीएमसी अब लुटेराको हातमा गएको छ। तृणमूल कांग्रेस छोडेर भाजपा सामेल भएपछि तपस रोयलले सत्तारूढ तृणमूल विरुद्ध आरोप लगाएका छन्। तृणमूल कांग्रेस अब लुटेराहरूको हातमा परेको छ भनी बताएका छन्। अर्कोतिर तपस रोयको उक्त टिप्पणीमा तृणमूल नेता कुणाल घोषले तपस रोयले व्यक्तिगत कारणले तृणमूल छोडेको बताएका छन्। तर तपस रोयले भाजपामा प्रवेश गरेर शुभेन्दु अधिकारीको जस्तो व्यवहार गरेर तृणमूल कांग्रेसको आलोचना गरेर पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरे पक्कै पनि सही नहुने उनको भनाइ छ। आज पनि सबैले तृणमूल कांग्रेसमा तपस रोयलाई मन पराउँछन्। पार्टीका शीर्ष नेता पहिला नै सक्रिय भएको भए यो समस्या समाधान हुन सकिन्थ्यो भनी बताएका छन्। तर कुणाल घोषले यति लामो समय पार्टीमा आबद्ध भएर विपक्षी दलमा प्रवेश गरेर शुभेन्दु अधिकारीको प्रभावमा तृणमूल कांग्रेसमाथि हावी नहुने सल्लाह दिँदै उनले बीजेपी सन्देश खालीका कुनै पनि उत्पीडित महिलालाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्। भाजपाले विभिन्न किसिमका कथाहरू फैलाइरहेको छ। भाजपाले सन्देश खालीका जनतालाई विभिन्न तरिकाले प्रलोभनमा राखेको छ भनी उनले बताएका छन्। बीजेपीलाई थाहा हुनुपर्छ कि खाना फैलियो भने कागको कमी छैन, तर कोयलको पनि कमी छैन भनी व्यङ्ग्य कसेका छन्। अर्कोतिर भाजपाले जतिसुकै प्रयास गरे पनि तृणमूल कांग्रेसबाट कोही पनि कोयल बनेर पार्टीमा सामेल हुने छैन। सन्देश खालीमा शान्ति थियो, शान्ति छ, शान्ति हुनेछ भनी बताएका छन्। विपक्षी दलहरू बीजेपी, कांग्रेस र सीपीआईएमले सन्देश खालीलाई अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। तर अब फेरि उनीहरूले शान्ति चाहन्छन् भनेर नाटक मात्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে শান্তনু ঠাকুরের নাম ঘোষণা হওয়ার পরে থরথর করে কাঁপছে তৃণমূল, থরথর করে কাঁপছে। তো এই ভয় থেকেই বিজেপি বাঁচাও কমিটি লিখে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে যেমন ওরা লিখছে তেমন আপনি বললেন ট্রেনে স্টেশনে কোথায় কোথায় দিয়েছে। এসব করে কোনো লাভ হবে না, কারণ তৃণমূল জানে যেখানে শান্তনু ঠাকুর জিতবে 2,22,000 প্লাস, সেই আতঙ্ক থেকে এইগুলো করছে। এতে ভাড়া পড়ে না, মানুষ এগুলো ভালোভাবে নেয় না। আর মানুষ তৈরি হয়ে আছে, জোট বেঁধে আছে যে মানুষ এই চোরেদের সরকারকে পতন দেওয়ার জন্য। দেখুন, আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে বিজেপি সাংগঠনিক দল ওই চোরেদের দল নয় যেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকবে। ওই চোরেদের দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে আর চোরেদের এই অপকর্ম। তাই এই চোরেদের এতে ভয় পায় না। মানুষ চোরদের তাড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে যে ভোটটা কখন হবে। 100% তৃণমূল মেরেছে। ভয় থেকে বললাম না, থরথর থরথর করে কাঁপছে। শান্তনু ঠাকুরের নাম ঘোষণা হওয়ার পরে থরথর করে কাঁপছে এরা। এই ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে করেছে।